Hello and welcome back. In this lecture, we'll discuss a couple of numericals based on Bernoulli's principle. Now, Bernoulli's principle you apply in problems involving hydrodynamics. Hydrodynamics means there is relative motion between fluid and container. जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के साथ साथ वी ऑल्सो यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. Problem based on equation of continuity I have discussed in previous lectures. So if you do not know how to apply equation of continuity, पहले उसको समझ लो, उसको उस lecture को देख लो, then come back to this. Now, so in hydrodynamics, we will write set of equations using equation of continuity and Bernoulli's principle. Bernoulli's principle के लिए we consider पहला चीज़ है तुमको हमेशा दो पॉइंट चाहिए होगा. ये कौन सा दो पॉइंट होगा वो डिपेंड करता है what is given in problem and what is unknown. तो इस पे केयरफुल होना है. उस दोनों पॉइंट पे कैलकुलेट क्या करना होता है. टू इन ऑर्डर टू राइट दैट इक्वेशन वी नीड टू नो प्रेशर. Pressure is defined at a point. Gravitational potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume. So we need these three information. तो carefully देखोगे y ये shortest distance है उस point का from zero potential energy level और v speed है उस point पे तुम्हारे fluid particle का. So we need pressure, we need this y जो कि shortest distance है zero level से और we need speed. So always consider two different point और वो दो point choice of दो point decide करेगा कि तुम कितनी जल्दी solution तक पहुंचोगे. तो वहाँ पे careful रहना है. और इसके साथ साथ of course we take help of equation of continuity. So let us discuss few numericals. Next question, gasoline of density rho flows steadily through a horizontal pipe that tapers in cross-sectional area from A1 to A2. A2 is half of A1. What is the volume flow rate when the pressure difference P1 minus P2 is 5160 Pascal? So clearly this is example of hydrodynamics. So we'll apply equation of continuity and Bernoulli's equation. Suppose this is point 1 and this one is point 2. So from equation of continuity A1 V1 equal to A2 V2. So A1 V1 is equal to A2 is half A1 into V2. So V2 is equal to twice V1, let us say equation 1. Now apply Bernoulli's equation. So point 1 and point 2, this is your, these 2 points knowingly we have chosen on same horizontal level, and let us take this to be datum. So at point 1 pressure P1, potential energy per unit volume 0 plus kinetic energy per unit volume is half rho V1 square, and similarly at 2 P2 plus gravitational potential energy per unit volume is 0 plus kinetic energy per unit volume is half rho V2 square. Now P1 minus P2 is given in problem. So from this equation let us find P1 minus P2, which is equal to half rho V2 square minus half rho V1 square equal to half rho is common. V2 from equation 1 is 2V1. So 4V1 square minus V1 square. So P1 minus P2 is equal to 3 by 2 rho V1 square. So V1 is equal to 2 times
P1 minus P2 divided by 3 rho and square root of this. Substitute numerical values. You know P1 minus P2, density is also given. And see, this comes out to be 2 meter per second or not. Now, as we have to find volume rate of flow, so volume rate of flow Q will be A into V. So let us use A1 into V1. Area of cross section A1 is given 1.5 into 10 to the power minus 3 into V1 is 2 meter per second. So into 2. So flow rate is 3 into 10 to the power minus 3 meter cube per second. Water with density 10 to the power 3 kg per meter cube is flowing steadily through a closed pipe system via motor M as shown in this figure. At height y1, the water speed and pressure are, it is given, V1 is this much and pressure is 30 kilopascal. At height y2, which is at a point higher than y1 by height h equal to 2 meters. So this is y2, height y2, and the difference in 2 is that of h is 2 meter. The speed of flow is 6 meter per second. A, what is pressure at y2? Find pressure. Let us use Bernoulli's principle because there is relative motion between container and fluid. So let us consider 2 points. Whenever you apply Bernoulli's principle, you apply it at 2 points, and as we have to calculate gravitational potential energy also, of course per unit volume, we need datum. Let us take this to be 0 level. So at 1, let me mark this as 0.1, this one is 0.2. So P1 plus rho g h1 plus half rho v1 square must be equal to P2 plus rho g h2 plus half rho v2 square. So P1 plus 0 plus half rho v1 square is equal to P2 plus rho gh plus half rho v2 square. So P2 is equal to P1 plus half rho v1 square minus half rho v2 square minus rho gh. Substitute numerical values. P1 is 30 kilopascal, so 30 into 10 to the power 3 plus half into density is 10 to the power 3 into V1. V1 is 4, so 4 square minus half into rho 10 to the power 3 into V2 is 6 square minus rho 10 to the power 3 into, take G to be 9.8 into H is 2. So we get this term is 16 by 2, so 8. So 30 into 10 to the power 3 plus 8 into 10 to the power 3 minus 18 into 10 to the power 3 minus 19.6 into 10 power 3. Now this sum is 38 into 10 power 3 and this one is 37.6. So P2 is equal to 38 minus 37.6 into 10 to the power 3 Pascal. So it is equal to 0.40 into 10 to the power 3 Pascal equal to 400 Pascal. So this is your desired unknown.
But what would be pressure at Y2 if water in the closed system was to stop flowing and pressure at Y1 were 25 kilopascal. So if water stops flowing, then it is case of fluid statics. So water, this liquid is in equilibrium. So pressure will vary with height and depth. Let us again consider 2 points. Let me show in same diagram points, say 2 and 1, and pressure at 2 and pressure at 1. Pressure increases with depth. So if you consider, so this depth is h, so P2 plus rho GH is equal to P1. So from this equation you can find that desired unknown, substitute numerical values. So P2 is equal to P1 is 25 kilopascal minus rho is 10 to the power 3 into 9.8 and h is 2. So 25 minus 19.6 into 10 to the power 3 Pascal. 25 minus 19.6 is, this will simplify this, and into 10 power 3 this comes out to be 5400 Pascal. So this is your desired unknown. Next question. Water needs to be pumped to the third floor of a building that is 10 meter above the ground level. The required pressure must maintain a flow rate of 0.25 liter per second from a pipe of 2 centimeter diameter. The mechanical pump is located at ground level and pumps the water through a 4 centimeter diameter pipe. So look at this arrangement. ये पंप है और डायमीटर जो है पाइप का वो चेंज हो रहा है. फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट स्पीड ऑफ वाटर इमर्जेस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे. सेकेंड पार्ट कैलकुलेट स्पीड विद विच वाटर फ्लोज थ्रू पाइप एट ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल पे क्या स्पीड है, एंड डिटरमाइन वाटर प्रेशर दैट द मैकेनिकल पंप नीड्स टू जनरेट टू डिलीवर वाटर एट रिक्वायर्ड फ्लो रेट. तो यहाँ पे प्रेशर कितना है. क्वेश्चन से ये क्लियर है कि ये हाइड्रोडायनामिक्स का प्रॉब्लम है. तो अगर प्रॉब्लम इन्वॉल्व करता है हाइड्रोडायनामिक्स, देन वी नीड टू राइट सेट ऑफ इक्वेशन यूजिंग पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे बर्नौलीज इक्वेशन से या बर्नौलीज प्रिंसिपल से. तो ये हमेशा डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि हाइड्रोस्टैटिक्स है या हाइड्रोडायनामिक्स है. सो नाउ पार्ट ए, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो फिर से. यू कैन पॉज योर वीडियो एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. और फिर 2 पॉइंट, अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर रहे हो तो 2 पॉइंट चाहिए. तो 2 पॉइंट व्हाट इज गिवन और क्या अननोन है उससे डिसाइड करेंगे. तो हम लोग को चूँकि स्पीड यहाँ निकालना है और यहाँ प्रेशर निकालना है, तो लेट अस कंसिडर दीज 2 पॉइंट्स. और इस दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से विल राइट दिस a1 v1 इक्वल टू a2 v2. माइंड यू फ्लो रेट गिवन है, a into v is flow rate. So a2 v2 is given equal to 0.25. L is liter per second. We need to convert into this liter into meter cube. So 1 liter is 10 to the power 3 centimeter cube. Now we need to convert this centimeter cube into meter cube.
So 0.25 into 10 power 3 into 10 power minus 2 to the power 3, you will get this. तो ये आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड. Now you know area of cross section A2. पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं. So this A2 V2 is equal to 2.5 into 10 power minus 4 meter cube per second. Now A2 is equal to pi R2 square. Radius diameter 2 centimeter given है. So pi into 1 into 10 power minus 2 whole square. This is A2. So it is pi into 10 power minus 4 meter square. Now flow rate, you know, A2 you know, so V2 equal to 2.5 into 10 power minus 4, that is Q by A2. Put numerical values. This is your Q flow rate. So V2 is equal to, check कर लो ये calculation. So it is 2.5 by pi. So check out whether it is equal to 0.80 meter per second or not. You can easily verify this. Part B, calculate speed with which water flows through pipe at ground level. तो इसी आइडिया को यूज कर सकते हैं. Q तो सेम रहेगा. So Q equal to flow rate, which is a constant in this case. Q कितने के बराबर था? 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड. और यहाँ डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. सो V1 विल बी डिवाइडेड बाय एरिया पाई इंटू R1 स्क्वायर. सो R इज 2 into 10 power minus 2 whole square. Change it into meter. So simplify. This is equal to, check कर लो ये numerical value आता है या नहीं, 0.20 meter per second. Third part, determine the water pressure that the mechanical pump needs to generate above the atmospheric pressure to deliver water at required flow rate. तो ये ध्यान रखना, ये above the atmospheric pressure, तो हम लोग को basically pressure का difference बताना है. Apply Bernoulli's principle. P1 plus half rho, ये दो पॉइंट तो चूज किए ही हुए हैं 1 and 2, इक्वल टू P2 plus half rho V2 square plus rho G Y2. Now we need to calculate gravitational potential energy. So datum, take this as datum. So P1 plus half rho V1 square plus 0, because ये point datum पे है. Pressure here is atmospheric pressure. I am using symbol P0 for that. Half rho V2 square plus ये कितना height है datum से? 10 meter. Let us write that as Y. Now चूँकि pressure कितना extra pressure है above atmospheric pressure वो बताना है. So we have to find this difference P1 minus P0 equal to, rearrange कर लो term, half rho V2 square minus V1 square plus rho G Y. Now put numerical values. Density water है तो 10 power 3. V2 और V1 we have already calculated, 0.80 whole square minus V1 is 0.20 whole square plus density 10 power 3 into G is 9.8 and Y is 10 meter. Make necessary calculations and see you get this value or not. ये pause करके ये check कर लो. 9.8 into 10 to the power 4 Pascal
Done. Next question, read it. Water flows from a large enclosed tank through a horizontal pipe of variable cross-sectional area as shown in figure. तो एक diagram given है. The upper end of tank is maintained at an absolute pressure of this much by pumping compressed air into it. The horizontal line has cross-sectional area this much in the larger section, and this is area in smaller section. A vertical tube of cross-sectional area, this is connected to the horizontal tube and open to atmosphere. What is speed of fluid leaving outlet when height of water in large tank is this much? What is speed of water in horizontal pipe? And C, to what height does the water stand in vertical tube when water height in large tank is this much? So many informations are there. ऐसा ही होता है. तो you need to draw a diagram. पहले ये ऐसा एक draw कर लो diagram. And then बहुत क्लियर है कि ये फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन है. तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे? एक इक्वेशन कहाँ से आएगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज फ्लो रेट इज कांस्टेंट. और दूसरा इक्वेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल, प्रेशर प्लस रो जी वाई प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट. नाउ क्या करना होगा तुमको? यू नीड पॉइंट्स. तो क्वेश्चन में चूंकि जो इंफॉर्मेशन जो चाहिए, तो आई हैव कंसिडर्ड 3 पॉइंट्स, 1 2 3. और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लिया विच यू कैन कॉल एज स्ट्रीम लाइन. सो ये 3 पॉइंट्स आर देयर. एंड देन डेटम, क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो यू नीड दैट. पार्ट ए, इसको आप कैलकुलेट करते हैं. स्पीड ऑफ फ्लूइड लिविंग द आउटलेट. तो हाउ मच इज स्पीड एट दिस पॉइंट? पॉइंट 3 पे क्या स्पीड है? यहाँ प्रेशर तुमको पता है एटमॉस्फेरिक है. तो 2 पॉइंट कौन कौन सा लें? पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट 1 और 3, a1 v1 इक्वल टू a3 v3. a1 is very large, so as a result this v1, यहाँ जो स्पीड है, will tend to 0. this v1 tends to 0, ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं. अब बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करके बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं बिटवीन 1 एंड 3. तो पॉइंट 1 पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो ज़ीरो हो गया बिकॉज v1 ज़ीरो है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये ज़ीरो लेवल है तो यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई मीन नॉन ज़ीरो होगा. P3, 3 पे P3 जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, प्लस पोटेंशियल एनर्जी वहाँ ज़ीरो है. नाउ सिंप्लीफाई दिस. V3 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं, चेक कर लो. V3 विल बी इक्वल टू, V3 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आएगा. एंड check this, or you can pause your video and check whether, and then यहाँ से यहाँ जो expression, the expression which I am writing, वही तुम्हारा expression आया है या नहीं, you can always check that. So P1 minus P atmosphere plus rho g y1, this is V3. सारा numerical value given है, substitute कर दो, calculate करो और चेक करो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है. टेक g एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना. सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 8.8 मीटर पर सेकेंड. चेक दिस आउट, खुद से कैलकुलेशन चेक कर लो. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज स्पीड ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस मच. मतलब इस पाइप में क्या स्पीड है? पॉइंट 2 पे वी कैन से. सो पार्ट बी में Q तो कांस्टेंट रहेगा. सो Q इज, तो अब 2 और 3 के बीच अप्लाई कर लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो यहाँ से V2 आ जाएगा, यानी V2 विल बी इक्वल टू A3 V3 by A2. So A3 by A2 into V3,
put numerical values, you know V3, A3 और A2 पता है, so it is equal to area of cross section given है, numerical value put कर दो, ये कैंसिल हो गया, 2/4 इज हाफ, V3 8.8 था तो 8.8 by 2 इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकेंड, 4.4 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया 2 पे. थर्ड पार्ट, टू व्हाट हाइट डज द वाटर स्टैंड इन वर्टिकल ट्यूब व्हेन द वाटर हाइट इन लार्ज टैंक इज 2 मीटर. अब इसमें वाटर किस हाइट तक होगा, तो यहाँ पे प्रेशर पता है तुमको P2, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और ये केस जो है यहाँ पे फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो स्टैटिक्स में फ्री सरफेस तुम आइडेंटिफाई कर लिए, आई मीन दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, सॉरी H मान लेते हैं. यहाँ से कितना डेप्थ नीचे आ रहा है H, तो प्रेशर एट 2 कितना होगा, P2, what you will write? So P2 will be equal to, set up equation हाइड्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से, पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं पार्ट सी के लिए. P2 इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस कितना डेप्थ है 2 का H, ये एक इक्वेशन हो गया, एंड प्रेशर एट 2, P2 और किसी तरह से निकाल सकते हैं, तो वी कैन यूज बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन अब किस किस पॉइंट के बीच यूज कर लें, बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 और 3 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों के लिए 0 आएगा. सो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस 0. यहाँ से P2 इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस हाफ रो, you can take this common, V3 square minus V2 square, equation number 2 from 1 and 2. तुम easily इसको simplify कर सकते हो, खुद से कर लो. from 1 and 2, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो, P एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट, रो GH इक्वल टू हाउ मच, हाफ रो V3 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, रो भी कैंसिल हो गया, H इज इक्वल टू V3 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G. चेक कर लो what you get, how much is H इक्वल टू, और वेरीफाई कर लो खुद से कैलकुलेट करके, पहले V3 और V2 का वैल्यू पुट कर लो. नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ, खुद से सॉल्व कर लो इसको. G is 9.8, so this is approximately 3 meter. इससे थोड़ा कम होगा, so that's why I have written here approximately. Done. Next question. Figure shows a tube of uniform cross section that is filled with water to siphon water at steady rate from a large vessel. Use Torricelli approach to find an expression for speed at level C. Use Bernoulli's equation to find an expression for pressure at level B. C. Find maximum value of H for which siphon will work. Calculate answer to previous when numerical values are given. So look at this arrangement. This is what is known as siphon. किसी भी कंटेनर से इस पाइप के हेल्प से ऐसे पानी निकाल सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड स्पीड एट पॉइंट C. नाउ we will not use this Torricelli approach. Torricelli law भी Bernoulli's principle और equation of continuity से ही आता है, so we will use first principle. मान लो ये एक पॉइंट है से 1 और एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करें, तो P1 इक्वल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा कह सकते हैं क्या, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और सेम लिक्विड भी है। ये गलत है बिकॉज लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, तो ये स्टैटिक्स का केस है या डायनेमिक्स का केस है? डायनेमिक्स का केस है। लेट अस राइट इक्वेशन यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये एक 0.3 ले लो। सो बर्नौलीज इक्वेशन 0.3 पे और 0.2 पोटेंशियल एनर्जी लेवल चाहिए। सो दिस इज योर जीरो लेवल। नाउ at 3 pressure P3 plus half rho V3 square plus potential energy 0 है equal to pressure at 2 plus half rho V2 square and 0 potential energy से H depth नीचे है, so minus rho GH. Now V3 इज 0। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था क्योंकि कंटेनर का साइज क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है। सो V3 टेंड्स टू 0 एंड P2 एंड P3 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज दोनों ओपन है टू एटमॉस्फेयर, तो वो दो टर्म कैंसिल हो गया। यू आर लेफ्ट विद दिस मच ओनली। सो हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो GH। सो V2 is equal to under root 2GH. This is what is known as Torricelli law, but हम लोग independently यहाँ तक पहुँच गए। Part B, find an expression for pressure at level B in terms of PA, H and H. So now we will apply Bernoulli's principle at point 3 and B. So दो पॉइंट क्या लेंगे, एक 3 लेते हैं या दूसरा B. So what equation you will write? Same zero gravitational potential energy level will do. So pressure at 3 is atmospheric pressure plus potential energy is 0 plus speed is 0, and pressure at B PB plus half rho, यहाँ कुछ speed है VB square, to find kinetic energy, that's why square, plus क्या height है capital H, so plus rho GH. Now फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट होगा और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। सो ए बी वी बी इज इक्वल टू A2 V2 बिकॉज एरिया सेम है, सो स्पीड विल बी सेम। सो वी बी इज इक्वल टू V2। वी बी का एक्सप्रेशन यहाँ यूज कर लो, V2 is root 2GH, use that. So how much is PB equal to PA minus rho GH minus half rho VB square becomes 2G small h, ये 2 cancel हो गया। So PB is equal to PA minus rho G is common, inside bracket you will get H plus H. Third part, find maximum value H max of H for which siphon will work, because if you increase this height siphon जो है वो काम नहीं करेगा। तो maximum height क्या हो सकता है, तो इस इक्वेशन से क्लियर होना चाहिए कि अगर H इंक्रीज होगा तो प्रेशर एट B क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ माइनस साइन है, सो प्रेशर decreases as H increases। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, that will correspond to maximum H. So PB minimum corresponds to, and that value is 0 of course, and that corresponds to maximum H. So equate PB to 0. So 0 equal to PA minus rho G H minus rho GH. remove this bracket, we have to find this H. अब ये 0 है तो ये कैपिटल H जो है H max होगा। so rho GH is equal to PA minus rho G small h. so H equal to, let us write H subscript max equal to PA by rho G. This rho G will cancel out, minus H. So this is
desired unknown. Next part, calculate answer to previous part. केवल numerical value तुमको हर एक part में put कर देना है. You can easily do that. Part A, Part B और Part C में rho W, pressure, atmospheric pressure and capital H and small h. So A सारा check कर लो खुद. 7.76 meter per second. B इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देना है. इट इज़ 52 किलो पास्कल. एंड सी, पार्ट सी, एच मैक्स 7.3 मीटर. बट काइंडली वेरीफाई दीज. सो टू कंक्लूड, in hydrodynamics, how you write equation in order to solve problem: one set of equation from equation of continuity, another equation from Bernoulli's principle, and for equation of continuity as well as Bernoulli's equation we need 2 points. और उस point का choice जो है that will play important role. और point choose करने के बाद क्या क्या पता होना चाहिए: speed, उसका height या shortest distance from zero level, and how much is pressure at that point. So in this manner you can very easily solve numericals based on Bernoulli's principle.